Now we are proving some property of a sequence through mathematical induction. इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है A1, A2 और A3, और वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो उसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज इक्वल टू 2, और उसके बाद A के डिफाइन की गई है इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस टर्म्स. सो A के इज डिफाइंड रिकर्सिवली यूजिंग द प्रीवियस टर्म. सो इनिशियल जो टर्म है वो आपको दे दी जाती है, और उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म को यूज करते हुए बनाई जा रही है. सो A के बेसिकली मल्टीपल है पिछली टर्म का A के -1 का, और उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो फॉर ऑल इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसके लिए ये इक्वलिटी मौजूद है. सो इन A पार्ट व्हाट वी हैव टू डू इज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो हमें लिखनी है सीक्वेंस की. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट B पार्ट इट इज क्लेम्ड दैट फॉर ईच इंटीजर n greater than equal to 0 the nth term of the sequence has the same value as that given by the formula 2 raised to power 2 into 5 raised to power n minus 1. और इस चीज़ को हम इस तरह भी कह सकते हैं, in other words the claim is that the terms of the sequence satisfy the equation an is equal to 2 into 5 raised to power n minus 1. So basically this is the formula for this sequence. एक तरह तो हम इस तरीके से ये सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरह हमने इसकी जनरल टर्म बना दी है सीक्वेंस की, और वो जनरल टर्म हमने जो है यूजिंग n हमने बनाई है. और हम ये क्लेम है कि ये सीक्वेंस भी सेम हमें वही टर्म्स देगा जो ये जनरल टर्म हमें टर्म्स देगी. सो बोथ द सीक्वेंसेस आर सेम. तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो जनरल टर्म है वो an is equal to 2 into 5 raised power n minus 1 है. So this is our next question, B part. In B part, so we move to the first part here. और जो फर्स्ट इसकी 4 टर्म्स हैं वो बनाना मुश्किल नहीं है. फर्स्ट टर्म इज गिवन 2, और क्योंकि 2 से हमारे पास जो है वो रिकर्सिवली फॉर्मूला यूज हो रहा है कि A2 इज इक्वल टू 5 इंटू A2 माइनस 1. तो A2 माइनस 1 जो है वो बेसिकली A1 आ जाएगी जो कि प्रीवियस टर्म है, और हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट दिस 10. और इसी तरह जो 10 आ चुका है जो नेक्स्ट टर्म है उस तक पहुंचने के लिए, A3 तक पहुंचने के लिए 10 को अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 50. एंड देन उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हम जब जाएंगे वी विल गेट 250. और नेक्स्ट पार्ट B पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा. So we are given with these terms of a sequence, और ये इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है A1 is equal to 2 and AK is equal to 5 into AK minus 1 for K greater than equal to 2, and let the property Pn be the equation An is equal to 2 dot 5 raised power n minus 1. We will use mathematical induction to prove that for all integers n greater than equal to 1 Pn is true. So above information जो हमें given है उसके मुताबिक हम इसे mathematical induction से solve करेंगे. तो पहला स्टेप जो है वो क्या है कि हम उसे चेक करेंगे कि n1 के लिए Pn जो है वो true है. So जब हम A1 इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2.5 1 minus 1, और 5 raised power 0 आ जाएगा और दैट इज 1, और हमारे पास जो A1 का रिजल्ट है दैट विल बी 2. अब अगर हम अपने सीक्वेंस में देखें जाके तो A1 इज डिफाइंड एज A1 इज इक्वल टू 2.
सो ये दोनों सीक्वेंस जो हैं कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं ये मैच कर गई हैं. सो an में 1 पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज़ 2 और a1 जो डिफाइन किया गया है सीक्वेंस में दैट इज़ ऑल्सो 2. सो इस इक्वलिटी को हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रिजल्ट है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रिजल्ट है. सो व्हाट इज a1 हियर? a1 वी कैन सी फ्रॉम आवर सीक्वेंस दैट a1 इज इक्वल टू 2. और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास अगेन वी हैव 2. सो सीक्वेंस जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वहाँ से भी हमारे पास जो a1 है वो रिजल्ट दे रहा है 2 और जो जनरल टर्म जो बनाई गई है उसमें 1 पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो 2. एंड हेंस द फर्स्ट स्टेप, द बेसिक स्टेप in mathematical induction is complete. Now we move to the second step, which is inductive step. Now we move to the next step, which is inductive step. For this we suppose that pk is true for all k greater than equal to 1. Here k is greater than equal to 1 and we have supposed that ak is equal to 2 into 5 raised to the power k minus 1 for all k greater than equal to 1. So after supposing this pk, what we need to show is that pk plus 1 is also true for k is greater than equal to 1. So for that purpose we have replaced k with k plus 1 on both sides, and after solving this k plus 1 minus 1 we get 2 into 5 raised to the power k. Now in this equality we have to prove that this equality holds. So we are choosing the left hand side of this equality, which is ak plus 1, and for this ak plus 1 since we know that k is starting from 1, so this is basically a2, and by going back and seeing what is our sequence was, and here we see that the sequence is defined as a1 is equal to 2 and ak is equal to 5 into ak minus 1 for k greater than equal to 2. So using this sequence, using the definition of the sequence, we get 5 into a k plus 1 minus 1, and solving this subscript we get 5 into ak, and what we have supposed for ak is ak is equal to 2 into 5 raised to the power k minus 1. So now we are using the value of ak which we have supposed for k greater than equal to 1. So now by putting this value we get 2 into 5 raised to the power k minus 1, and then by solving we take this 2 out and we take this 5 inside the bracket and multiply it by 5 raised to the power k minus 1, and by solving we get 5 raised to the power k. So now we come to this pk plus 1, and the right hand side in this pk plus 1 is 2 into 5 raised to the power k, which is exactly what we want. And now we have shown that ak plus 1 is equal to 2 into 5k, and the proof is finished. Now we proved another property through mathematical induction.
So here we are given that this Pn, which is basically this equality, is true for n greater than equal to 1. So what we need to do is we have two steps, basic steps. So first step is a basis step, in which we will put the value 1 in the given predicate Pn, and on the left hand side of this equality we see an expression which is basically a product of terms of some sequence whose general term is given like this 1 plus 1 over n. So when we choose 1, we get this first term here, and we get the product of this first term, which after solving we get 2. But for the right hand side, what will be the result? We see that 1 plus 1 is also 2. Both sides have equal results. So we move to the next step, which is an inductive step. In the inductive step, we have to prove a statement which is for all integers k greater than equal to 1. If the property is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k plus 1. So we have to assume that pk is true, and we have to show that pk plus 1 is also true. So we suppose this equality for k, where k is starting from 1, and now we put k plus 1 instead of n in the predicate, and we get this equality as pk plus 1. We take the left hand side of pk plus 1 and we see that what can we do. In the left hand side we see that k plus, the terms are going up till k plus 1, so the previous term will be 1 plus k, 1 over k. So we know that the whole product of these term is given by a formula which is k plus 1, which we have assumed in the inductive hypothesis, and then after multiplying these two numbers, this will be the result, k plus 1 plus 1, which is required as in the, so in our pk plus 1, and that's how the property is proven. So in this problem we are given a property Pn, which is basically this inequality 2n is less than n plus 1 factorial, and this is true for all integers n greater than equal to 2. So here are some questions regarding this inequality. The first question is that if P2 is true or not. In the second part, it is required that what is pk. The next part is what is pk plus 1, and in the last part it is required that what must be shown in the inductive step. So here is the solution of this problem.
Firstly, we need to check P2 is true or not. So we put here 2. We put 2 in place of n on the left hand side, and we get 4. And on the right hand side, we see that when we put here 2, we get 3 factorial, which is 6. So this inequality holds for P2. In the next, it is required that what is Pk, so we are just putting k instead of n in the above inequality, and here is our Pk. And for Pk plus 1, we need to replace n with k plus 1, and we get this inequality. And what must be shown in the inductive step, so we need to form a statement. If k is any integer with k greater than equal to 2, 2k is less than equal to k plus 1 factorial, then 2k raised power k plus 1 is less than k plus 2 factorial. This is basically k plus 2 factorial. So if we see that these are the main steps involved in any proof through mathematical induction, and we also see here that for all quantifier is used here implicitly.